हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका चॉपस्टिक मैथ्स में। इस वीडियो में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स क्या होते हैं ये सीखेंगे। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स आर ट्रांसफॉर्म्स व्हिच कन्वर्ट अ फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल t टू अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल s। सो इन वेरी इजी लैंग्वेज ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोई भी एक फंक्शन जिसका वेरिएबल t हो उसे दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है जिसका वेरिएबल होता है s। So you can call it a function converter। एक फंक्शन जिसका वेरिएबल t हो उसको दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है जिसका वेरिएबल s है। Now, if f of t is any function of t, then Laplace of f of t is equal to phi of s। यानी f of t अगर कोई भी फंक्शन है तो इस पे हम f of t पे हम जब हम लाप्लास अप्लाई करते हैं तो मैथमेटिकली उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Laplace of f of t is equal to phi of s। यानी f of t पे जब हमने लाप्लास अप्लाई किया, ये L यानी कि लाप्लास ऑपरेटर है, तो लाप्लास अप्लाई जब हम f of t पे करते हैं तब हमें दूसरा फंक्शन मिल जाता है या f of t ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरे फंक्शन में phi of s जिसका वेरिएबल s है। If f of t is equal to e raised to at, then Laplace of e raised to at is equal to 1 upon s minus a। यानी कि जब ये फंक्शन e raised to at पे हमने जब लाप्लास अप्लाई किया तब वो कन्वर्ट हो गया या ट्रांसफॉर्म हो गया दूसरे फंक्शन में which is 1 upon s minus a, where s is the variable and a is any number। Now mathematical definition लाप्लास का क्या होता है ये हम जानेंगे। Now Laplace of f of t is mathematically defined as the integral from 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt, that is equal to phi of s। That is, agar f of t is equal to e raised to at, then the Laplace of e raised to at is mathematically defined as integral from 0 to infinity e raised to minus st into e raised to at dt, and this integral will be equal to 1 upon s minus a। तो let us see now Laplace transforms formulae। So ये 9 फॉर्मूले हैं लाप्लास के और आपको ये पूरे 9 फॉर्मूले जो है आपको मेमोराइज करने होंगे और ठीक से मेमोराइज करने होंगे, बिकॉज इन फॉर्मूले के बगैर आप लाप्लास का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे विदाउट नोइंग दिस फॉर्मूला। सो आप इसे ठीक से मेमोराइज करना। देखिए 3 फॉर्मूले जो है अलजेब्राइक है, 2 फॉर्मूले एक्सपोनेंशियल है, 2 फॉर्मूले सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक है और 2 फॉर्मूले जो है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला Laplace of k is k upon s, where k is any constant, any number। So let us take any number in example। If k is 1, then Laplace of 1 is 1 upon s। Second formula, Laplace of t raised to n is n factorial upon s raised to n plus 1। Now this is when n is any positive integer। So let us take one example of t square। This is Laplace of t square will be equal to 2 factorial, here n is 2, so it will be 2 factorial upon s raised to 2 plus 1, which is 2 upon s cube। Now when n is not a positive integer, then Laplace of t raised to n will be gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1। That is Laplace of t raised to 3 by 2, here n is 3 by 2, you can see it is not a positive integer, so this will be gamma of 3 by 2 plus 1 upon s raised to 3 by 2 plus 1, which is gamma of 5 by 2 upon s raised to 5 by 2। Formula number 4, Laplace of e raised to at is equal to 1 upon s minus a। So let us take one example, Laplace of e raised to 3t। Now a here is 3, so this will be equal to 1 upon s minus 3। Formula number 5, Laplace of e raised to minus at is 1 upon s plus a। Now here a is, that is, let's take an example, Laplace of e raised to minus 2t is equal to 1 upon s plus 2। Now here you can see a is equal to 2, so Laplace of e raised to minus 2t is 1 upon s plus 2। Laplace of sine at will be equal to a upon s square plus a square। So one example, Laplace of sine 3t, so here a जो है is equal to 3, so this will be equal to 3 upon s square plus 3 square।
Formula number 7, Laplace of cos 80 is equal to s upon s square plus a square. So example, Laplace of cos 40, a is equal to 4, will be equal to s upon s square plus 4 square. Formula number 8, Laplace of sine hyperbolic 80 will be equal to a upon s square minus a square. So one example, Laplace of sine hyperbolic 2t, here a is 2, will be equal to 2 upon s square minus 2 square. And the last formula, formula number 9, Laplace of cos hyperbolic 80 is equal to s upon s square minus a square. So one example, Laplace of cos hyperbolic t, now a is here, a is 1, will be equal to s square upon s square minus 1 square. So these are the 9 formulas. Memorize this very well. Write it down once without looking and confirm that you have memorized this correctly. Okay, thank you very much.